Hello, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the third session of Women in Law Talks, in which we'll be continuing the discussions, but this time our focus would be on fair representation when it comes to law firms and law chambers. I apologize for the little delay we've had, completely unprecedented. And I hope that, all of you have joined us, and we'll just wait for a couple of seconds and, make sure that everybody just joins in. During that time, I will take the opportunity of introducing the guest we have, who's the co-author of this study that Women in Law recently published on fair representation in the justice sector. I have with me Ms. Nida Usman, who is also the founder of Women in Law. So thank you, Ms. Nida, for your time. I hope you're doing well. I am. Thank you so much for hosting us for these dialogue series and for agreeing to have this conversation with me, because I feel like younger people like you are directly sort of impacted by the issues that we are supposed to be covering today. So looking forward to this conversation with you, Hania. I hope you're well. Yes, thank you so much, Miss. This is my absolute pleasure. When we talk about law firms and chambers, so each and every student, law student, जब वो law school में होता है और उसे graduate करना होता है, एक standard route है, एक standard expectation होती है कि अगर तो वो first generation lawyer है और अगर तो मतलब even if you have a family background in law, you most likely expected to join a law firm or a chamber ताकि आप एक तरह से काम सीख सकें और actually अपना career start कर सकें. But when we talk about representation in these law firms and chambers, so Ms. Nida, you've conducted an in-depth study. What is the state of representation in these law firms and chambers in Pakistan? Can we say they are diverse and inclusive like they should be? Thank you so much. I hope my screen is visible. I'm sharing my screen so that we can look at the presentation as well. Is it visible, Hania? Yes, Miss, it is. Okay. So thank you so much for starting with the question which hits right to the very core of the issues जिसकी हम बात कर रहे हैं justice sector के हवाले से. जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने इसके अंदर काफी comprehensive एक overview लिया of not just justice sector as a whole, but उसके अंदर हमने different segments को study किया individually भी, and the picture was quite insightful. And जहाँ तक आप बात करती हैं law firms में representation की, तो काफी interesting चीजें भी हमने discover की, जो कि when we set out तो होता है ना कि आपका एक अपना hypothesis भी होता है या जो एक general perception बनी होती है, you begin with that and you think that a lot of law firms are actually not they don't really have enough female representation in them. अब इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा issue था हमारे लिए, जो सबसे बड़ा challenge है, वो ये है कि अभी भी हमारे पास complete data accessible नहीं था as far as कितनी पंजाब में total law firms है और उसके अंदर कितने male and कितने female associates हैं. So in order to make up for that, we took a smaller sample. We went to the websites of the law firms जो कि celebrated law firms हैं, जिनकी rankings आती हैं, और हमने different cities जो हमारी थी basically इस project के नीचे, उनके targeted locations के अंदर भी हमने sample के अंदर उन law firms को, उन areas की law firms को, उन cities की law firms को भी उनकी websites और जो official हमारे पास accessible information थी उसकी basis पे फिर हमने एक smaller sample के ऊपर अपना जो है वो एनालिसिस किया. उसमें से ऑफ कोर्स ज्यादातर जो फर्म्स हैं वो लाहौर में है, बाकी मुल्तान और रावलपिंडी की भी उसके अंदर है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज लाहौर के अंदर ज्यादा लाहौर की लॉ फर्म्स जो हैं उनकी वेबसाइट्स और जो इंफॉर्मेशन थी इवन ऑन दीज चेम्बर्स वाली जो वेबसाइट्स होती हैं या रैंकिंग वेबसाइट्स वो भी ज्यादा थी, तो हमारा जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन था वो वहाँ पे ज्यादा था. सो we did a survey of a smaller sample of firms to understand how what kind of state of representation there is. उसके अंदर फिर जिस तरह हम बात करें तो हमारे पास एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थी, that was about जहाँ फीमेल लॉयर्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है या पार्टनर्स हैं या वो लॉ फर्म्स खवातीन ने ही सेटअप की हुई है,
वहां पे हमें निचले लेवल के ऊपर भी, यानी एसोसिएट लेवल के ऊपर और इंटर्न्स लेवल के ऊपर भी, वी सॉ दैट देयर वाज अ हायर ट्रेंड और इंक्लिनेशन फॉर फीमेल lawyers to join those firms as well. So it was very interesting to see कि जब जो हमारा बेसिकली एक नैरेटिव भी है, या जो जिस चीज को लेके हम चलते हैं कि जब आप ऊपर खवातीन की रिप्रेजेंटेशन इनहांस करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो उससे नीचे भी फर्क पड़ेगा, and you'll have more women joining in and participating in active legal practice. Whereas जिन फर्म्स के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा जो मेल डोमिनेटेड थी, जिसमें मेल लेड थी या पार्टनर्स उसमें ज्यादातर मेल थे, वहां पे हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन कम नजर आई. बल्कि एक जो बहुत इंटरेस्टिंग इसमें से चीज निकली खास तौर पे विद रेफरेंस टू क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस, वो बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था. दो फर्म्स को हमने कंपेयर किया. एक जो विमेन लेड लॉ फर्म थी और उनके पास जितनी एसोसिएट्स थी वो भी सारी फीमेल थी. दिस इज अ रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड फर्म लेड बाय हुमा जमील बाबर. And the interesting thing is that she particularly works in areas of criminal law and family law practice. Now, Hania, you would be aware of the fact that criminal law एक ऐसी field है जिसके अंदर सबसे ज्यादा discouragement face करते हो आप लोग. I don't know, as a student आपको कभी ये चीज इस लेवल पे आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि नहीं, लेकिन हमने ऑफ कोर्स अपने लेवल पे भी और जितनी रिसर्च भी है हमारी, जनरल वर्ड इज दैट criminal law is considered to be a field which is more suited to men. Is that so? Miss, I have a little personal story to share here as well. It's absolutely right. Criminal को इसी तरह view किया जाता है. In December only, I was applying to this top law firm और मैंने कॉल किया उनको कि मैं अपना सीवी वगैरह कहाँ फॉरवर्ड करूँ. सो आई मीन मुझे बहुत हैरानगी हुई when they said कि अच्छा हमारा जरा क्रिमिनल फोकस है ना, हमारे पास यहाँ पे कोई खवातीन हैं का ज्यादा काम कर रही हैं तो हम बेटा नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप अपना सीवी भेज दें. एंड मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी इसके बाद कि मुझे रखेंगे, तो उन्होंने रखा भी नहीं. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू और ये हम लोग एज स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं इशू. बिल्कुल. और ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि अब देखिए विमेन लेड लॉ फर्म है जिसपे हेड पे भी हुमा जमील है, उनके नीचे जितनी एसोसिएट्स है वो भी उनके साथ हर तरह का काम कर रही हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो काम है वो ज्यादा क्रिमिनल और फैमिली पे फोकस्ड है. तो वो जो मिथ है कि जी इट्स अ हार्ड फील्ड या खवातीन इसमें नहीं कर सकती, तो वो मतलब दैट्स समथिंग दैट becomes questionable then, that if you have women leading in these positions, encouraging and creating that sort of positive रोल मॉडल वाला एक एस्पेक्ट भी, तो उसके अंदर फिर जो नीचे भी सारी खवातीन काम कर रही है उन्होंने तो ये इश्यूज नहीं रेज किए कि जी हम नहीं क्रिमिनल करेंगे या हमें बस आप फैमिली तक ही महदूद रखें. सो इसके एवज जो हमने मेल लेड लॉ फर्म को एनालाइज किया उसके अंदर सिर्फ 25% रिप्रेजेंटेशन थी विमेन की. उनके सारे जितने भी एसोसिएट्स थे उसमें से, सो बेसिकली 4 उनके पास एसोसिएट्स थे तो उसमें से 1 खातून थी. और उसमें हम वही देखते हैं कि वहां पे जाहिर है इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें क्रिमिनल वाली साइड के ऊपर इनकरेजमेंट और वो एक माहौल नहीं नजर आया जिसके अंदर एक से ज्यादा या आपके पास एक कह सकें कि जी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन वर एनकरेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट, या जो भी उसके और भी फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर तो होता नहीं है. इसी तरह AGHS का एग्जांपल अगर आप देखें, जो आसमा जहांगीर साहिबा की जो लॉ फर्म है उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स देखे जाते हैं. वो भी प्योरली फीमेल एक इदारा था भी और है भी, एंड इट्स डूइंग सम इनक्रेडिबल वर्क. फिर हमने आसमा हामिद साहिबा की लॉ फर्म जो भी हाल ही में उन्होंने सेट की है, वो भी वुमेन लेड लॉ फर्म है और वहां पे भी क्रिमिनल का काम देखा जा रहा है. और उनके पास भी जो खवातीन एसोसिएट्स की तादाद है इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, वो कदरे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट. यानी अगर मेल लेड लॉ फर्म है तो उसमें खवातीन की शरह कम है, whereas if it's a women led law firm, even if it is doing criminal work, so you see that there is definitely a higher percentage of women who are working there as associates, irrespective of whether that's criminal law, whether that's constitutional law. So it doesn't really depend on the area of practice. That's one of the conclusions that we got out of it. So ये थोड़ा सा मैं बस हाईलाइट करना चाह रही थी इस स्टेट के हवाले से कि कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ परसेप्शंस भी हैं जो कि हमारी इस स्टडी से आई फील के रिवाइज होनी चाहिए. एंड जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड हियर, अगर आप पंजाब कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन की रिपोर्ट्स देखें, जितनी भी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स है,
you will notice that there's a lot of violence against women cases on the rise and everything. और जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो जाहिर है स्टेट ने प्रोसिक्यूट करने होते हैं. प्रोसिक्यूशन भी हमारी, we will discuss that in more detail in the next talk, but I just wanted to highlight कि देखिए क्रिमिनल लॉ और ये प्रोसिक्यूशन और इसमें जो खवातीन पे इम्पैक्ट आता है एज विक्टिम्स और एज सर्वाइवर्स, वो इतना प्रिवेल करने के बावजूद भी आपको उसके हिसाब से या रिलेटिव टू दैट उतनी खवातीन प्रोसिक्यूशन में या वो लॉ फर्म्स जो क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रही हैं उसमें इतनी नजर नहीं आती हैं, उनको डिस्करेज कर दिया जाता है. सो दिस इज क्वाइट परप्लेक्सिंग टू नोट कि डिस्पाइट देयर बीइंग violence against women on the rise, you don't have a comparable number of female lawyers or prosecutors working in that zone, and उसके जो structural factors हैं वो हम आगे जाके आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. Over to you, Hania. Right, miss. So आपने एक बहुत ही important aspect को highlight किया, वो है myth. So जब हम लोग लॉ स्कूल स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न डिग्री प्रोग्राम, हमने पहले साल क्रिमिनल लॉ पढ़ा, एंड a lot of my female colleagues actually, उनके जहन में भी बस यही था कि हमने criminal lawyers ही बनना है. But now the fact that we're in our final year, तो हम लोगों को opportunity ही नहीं मिली कि हम किसी criminal law firm में काम करें. So by these talks, I think one of the very important things that is being highlighted is कि कौन सी एक तो ये एक myth है कि खवातीन काम नहीं कर सकती. जब वो कर रही हैं, जब उनको opportunity मिल रही है, so they're proving their mettle by dint of their hard work. सिमिलरली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हम अपने ऑडियंस को दे रहे हैं कि ये फर्म्स हैं जहां पर आप जा सकती हैं अगर आपने इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है. Now moving on to the second most important aspect that we'll be discussing in today's talks. When we talk about these law firms and these chambers, क्या यहाँ पर कोई regulation या कोई लेजिस्लेशन, इवन कोई रूल्स हैं जो इनको गवर्न कर रहे हैं, जो एक्चुअली डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को इंश्योर कर सकते हैं? एंड ऑन मोर लाइक जनरल लेवल, आर दीज लॉ फर्म्स, दीज चेम्बर्स रेगुलेटेड? कोई मतलब कहीं पे इनको अकाउंटेबिलिटी है इनकी? क्या चीजें हैं, कौन से मतलब हमें एक्चुअली नहीं पता कि कौन सी स्कीम है जो उनको गवर्न करिए. सो इफ यू कुड रिफ्लेक्ट ऑन दैट, एंड सेकेंडली इफ यू कुड रिफ्लेक्ट ऑन वेदर द scheme of regulation has any provisions for diversity and inclusion. I think this is a very, very important question. Regulation of law firms goes at the very heart of the human resource problem that the profession essentially suffers from. And more than a gender question, or more than a gender issue, it is essentially a question of decent work arrangement and जो basic ह्यूमन राइट्स हैं आपके एज फार एज वर्क गोज. आई थिंक ज्यादातर इश्यूज वो हैं. तो ऑफ कोर्स जब हम जेंडर लेंस से देखते हैं या खवातीन उस चीज को जब उस सिचुएशन में होती हैं तो उस चीज को हाईलाइट उन्होंने ज्यादा किया, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो वो इशू सिर्फ खवातीन से मुंसलिक नहीं है या वो खवातीन स्पेसिफिक इश्यूज नहीं है. वो एक ब्रॉडर, एक बड़ा मसला है हमारे लॉ फर्म्स जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं कि वहां पे कोई प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं है. आप देखें कोई रेगुलेटेड उनके वर्क आवर्स नहीं है. इनफैक्ट अगर आप ज्यादा लंबी देर बैठ रहे हैं, इवन इफ दोज आर अनप्रोडक्टिव आवर्स एंड यू डूइंग nothing but you're just clocking in certain number of hours, so it's viewed as your commitment to the firm, and वो उसकी आउटपुट नहीं गेज करेंगे but they'll see कि यार ये बंदा टाइम ज्यादा दे रहा है, बैठ ज्यादा रहा है. तो वो somehow all of this is a very artificial way and a very non scientific or productive way of measuring the contribution that a person makes to the firm. And then all of these then feeds into the discriminatory एक जो perception होती है कि जी खवातीन तो ज्यादा देर बैठती नहीं है, वो जल्दी चली जाती हैं या वो वीकेंड्स पे नहीं आती या वो like all of that stuff then creeps in. And उसके अलावा आप देखिए, it's not just the timings, it's not just the workload, it's also कि your wages, your salary is not regulated. आपके पास जो कमिटीज होनी चाहिए अंडर द लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल हरासमेंट लॉ के नीचे कमिटीज होनी चाहिए, वो नहीं है. आपके पास कोई और अगर डिस्प्यूट है आपका अनफेयर डिसमिसल से रिलेटेड, मतलब सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम अपनी लॉ फर्म्स को भी कोई उस तरह से इदारे नहीं है ना, essentially partnerships है. And when they are in the partnership structure, what happens is
that these are essentially considered to be internal governance matters of the firm, right? And आप अपने आपको जिस तरह भी स्ट्रक्चर करें एज अ पार्टनरशिप, आपने उसमें किसको क्या राइट्स देने नहीं देने, वो आपका इंटरनल एक मैटर समझ के, तो एवरीबडी काइंड्स ऑफ वॉशेस देयर हैंड्स ऑफ, एंड नोबडी रियली केयर्स अबाउट दीज ह्यूमन राइट्स के जो, या ह्यूमन रिसोर्स के जो बेसिकली, क्योंकि देखिए अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड इदारा है, आप कंपनी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर विंग या डिपार्टमेंट होता है जो आपकी प्रोग्रेशन जो है, एडवांसमेंट इन द फर्म फॉर एग्जांपल, आपकी एंट्री एग्जिट रेगुलेटरी होती है, आपने जो जैसे जिसको हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट देनी होती है, यानी कि जब आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के नीचे ऑपरेट कर रहे होते हैं जो रेगुलेटेड हो, तो यू हैव टू कंप्लाई विद सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रोविजंस, जो कि फर्म्स के स्ट्रक्चर में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उस तरीके से रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है ना जो आपको एज एन इंस्टीट्यूशन या एज अ फर्म रेगुलेट करे। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ, हमारे जो लीगल प्रैक्टिस एंड बार काउंसिल एक्ट है, जो हमारी लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973, उसका सेक्शन 56M जो है, that empowers your bar councils to make rules to regulate law firms. So the provision is there. There is authority that the bar councils have by virtue of this provision. लेकिन आप देख लें कि वो रेगुलेटरी कैप्चर ऐसा है बार काउंसिल्स के ऊपर कि उन्होंने अभी तक इसके नीचे कोई रूल्स नहीं बनाए, कोई कायदे कवानीन नहीं बनाए, सिर्फ एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स के अंदर है, जिसे हम कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं, जो वकीलों पे तो अप्लाई होता है, बट एज सच फर्म्स का जो स्ट्रक्चर है कि उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल सारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होंगी, उसके क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और फिर एक दफा जब आप फर्म में आ गए हैं तो आपने एडवांस कैसे करना है, आपकी प्रमोशन कैसे होनी है, ये सब चीजें कहीं पे भी यूजुअली मेंशन्ड नहीं होती, और ये डिटर्मिन करता है जो बंदा बैठा हुआ है एज अ पार्टनर या जो मैनेजिंग पार्टनर है, ये उसकी डिस्क्रेशन है उसके हाथ में। अब अगर रूल्स हो और इस तरह का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाए तो यू वुड एक्सपेक्ट कि अच्छा कुछ इसके बारे में जो है बार काउंसिल्स ने कोई ऐसे रूल्स या प्रोग्रेशन के स्टेप्स मुकर्रर कर दिए विच एवरीबॉडी ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं कि जी इतने साल मुझे हो गए हैं, या इतना मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टू द फर्म, तो अब मेरी प्रमोशन ड्यू है, मुझे एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बन जाना चाहिए। तो इस तरह की कोई प्रोग्रेशन रूट्स वगैरह फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करते, और हमने जितने लोगों से बात की, हमारे रिस्पोंडेंट्स ने भी हमें यही रिपोर्ट बैक किया कि law firms are not regulated. In fact, they highlighted several other interesting things as well. Let me see if I have them in the presentation, and I will yeah, so these were some of the basic findings. जिससे मैंने 56M की तो पहले बात कर ली है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, रेगुलेशन की एब्सेंस में आप देखें कोई क्लियर एंट्री या प्रोग्रेशन के रूट्स नहीं है जो इनकरेज कर सके, और साथ ही साथ कोई ऐसी ओपन ऑब्लिगेशन भी नहीं है to pledge commitment to increasing diversity and inclusion within the firm. Hiring and progression largely remain a discretionary, arbitrary, need-based and informal process in most firms. And उसके अंदर it also depends यहाँ पे हमारे कि आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, कितना बिजनेस आप एज एन इंडिविजुअल लॉयर फर्म में लेकर आ रहे हैं, आपके अपने क्लाइंटेल कितनी आपने बना ली है, एज अपोज टू मेट्रिक ऑफ कितने नंबर ऑफ इयर्स इन सर्विस है, या कितनी आपकी अब काम की अपनी इटसेल्फ वैल्यू कितनी है। इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग चीज मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, where one of the respondents even doubted whether the progression of employees was even an objective of the employer, as most employers tended to run their practice as a one-man show, projecting and securing their interest and success rather than being interested in developing a culture of learning and growth for collective advancement of the associates working under them. Only 3 firms out of the 20 we sampled for this study had mentioned any clear track and progression timelines on their website, and even then we are not sure कि इनको मेंशन करने के बावजूद वो कितना किस हद तक इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि इवन दो वी सेट अप फर्म्स बट दे आर रन एज वन मैन शोज, व्हिच एसेंशियली मींस कि आप वकालत तो अपनी एक इंडिविजुअल की तरह ही अभी भी
चमकाने की कोशिश करें एसेंशली, एंड अब जो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो लार्जली मिसिंग है. मैं ये नहीं कहती कि किसी लॉ फर्म में ये नहीं होता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स नॉट द नॉर्म. So that's essentially what I wanted to highlight with this aspect. So you know, with that, I essentially want to come back to that point that it's not just a gender issue. These are basic human resource policy ke issues, and because majority of the law firms are male led and male dominated, तो वहाँ पे ये सारी problems ज़्यादा हैं. अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि खवातीन लेड लॉ फर्म्स भी आती जा रही हैं. अब ये अभी देखने की बात है कि वहां पे ये सारी चीजें बेहतर होंगी कि नहीं होंगी. आई थिंक वी नीड सम मोर टाइम फॉर मोर फर्म्स टू बी एस्टैब्लिश, और उनको थोड़ा वक्त गुजरे तो हम फिर ये एक मे बी इन फेज 2 वी कैन स्टडी के विमेन लेड लॉ फर्म्स के अंदर क्या ये कल्चर्स बेहतर है कि नहीं. एट दिस पॉइंट इट्स टू सून टू से दैट, बट दिस इज वेयर एसेंशली वी स्टैंड. बट जहाँ पे खवातीन आती भी हैं, उनको एंट्री मिल भी जाती है, तो वी नो दैट यू नो द probation periods for them tend to be much longer than for their male counterparts, and several other obviously issues as well, जिसकी हम बाद में बात करेंगे. But essentially this is where we stand as far as regulation is concerned. Right. So as you've mentioned कि क्योंकि कोई clear cut HR policies नहीं है, even जब law firms की हम मुख्तलिफ जब you know when these students are looking for placements, हम different law firms के websites पे जाते हैं, हम associate की positions के लिए there's a very general generic eligibility criteria given. पता नहीं होता, और अगर आप apply कर दें online, they never get back to you. और जैसे आपने बताया कि sole discretion होती है law firm के अंदर, either it's the managing partner or there's one or two other people who are managing this entire recruitment process, there's a very high probability कि nepotism हो. और ये जो एक even impression आ जाता है ना law students के अंदर या even recent graduates के अंदर कि nepotism है, वो पूरे profession के एक तरह से आपका confidence नीचे लेके जाता है. So because I don't have any connections, because I'm not very well connected individual, मेरा chance नहीं है कि मैं किसी अच्छी firm में जा सकूं, या you know I get an opportunity to work in one of the very well-reputed law firms. Miss, I mean, moving on, जब हम लोग खवातीन की बात करते हैं, और ये मैं आपसे पूछूंगी कि in general आपकी study के अंदर कौन से obstacles आप लोगों को you were able to find the obstacles जो खवातीन face करी हैं. But I think just to start off things, जब अपॉइंटमेंट की बात आती है या जब रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो बहुत सारी खवातीन को प्रेफर ही नहीं किया जाता just because they are women. And you know in a year or two a lot of people have been very outright about this. उन्होंने कहा कि 1-2 साल में इनकी शादी हो जाएगी, then they plan to have families, they're not going to be very productive for the firm, so उनको outrightly reject कर दिया जाता है. So आपने अपनी रिसर्च के अंदर क्या ये भी इशू फाइंड आउट किया कि ये एम्प्लॉयर्स इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दिस इज वन थिंग दैट इम्पीड्स वुमेन? And secondly, like what are the overall obstacles जो आपकी खवातीन जो women who were included in the study, what did they highlight? What are the obstacles they face in these law firms and law chambers? अच्छा, तो हमने इसको एस्पेक्ट को देखा था, एंड इफ यू सी द स्लाइड जो इस वक्त मैंने खोली है, दिस इज अबाउट द लॉ फर्म्स एंड द सोशल कंस्ट्रक्ट्स अराउंड women and hiring them and whatnot. And this was something very very interesting, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स थे. इसमें खवातीन का अपना पर्सपेक्टिव भी था, इसके अंदर लॉ फर्म्स वाले लोग क्या सोच रहे हैं, एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव था, एंड जनरल जो हमारे लीगल कम्युनिटी के अंदर एक जनरल परसेप्शन एंड बायसेस है वो भी था. तो हमने बिल्कुल इस क्वेश्चन को परस्यू किया कि एक तो कोई ऑफ कोर्स सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी पॉलिसीज नहीं है व्हिच मेक इट कंड्यूसिव फॉर वुमेन टू सर्वाइव. जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्स की पहले भी बात कर रहे थे, लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड कि एसेंशियली आपको पता ही है कि जस्टिस सेक्टर हिस्टोरिकली हैज हैड अ वेरी मैस्कुलिन आउटलुक and has been dominated by men in key positions, so they of course fail to understand and accommodate women's needs. अब profession of course जैसे मैंने बात की थी कि demand करता है long hours clock हो, but it doesn't offer any supportive infrastructure or policies such as maternity leave or daycare allowance or facilities that can enable working mothers to sustain their jobs, या उनको कोई
सेफ मोबिलिटी के ऑप्शंस प्रोवाइड करके, अगर आपने रात तक उनको बिठाना है तो आप कम से कम उनकी कोई सेफ मोबिलिटी इंश्योर करें, उनका आना जाना ईज आउट करें. सो लाइक बेसिक फैसिलिटीज लाइक सेपरेट and equipped toilets for women are not freely accessible in many places, as we've often talked about. तो ये जो basic rights हैं और जो खवातीन को obviously they ask for decent working conditions, right, and basic facilities and all of that. तो इस सबको भी एक baggage और एक liability समझते हैं बहुत सारे जो employers हैं, and this baggage is then obviously compounded by the issue of this lack of agency that women might have post their marriage and everything. So it's very interesting how these, lack of will on part of the employers to provide conducive environment and these facilities, coupled with, how they perceive women and gender biases कि जी ये आएगी तो शादी कर लेगी और चली जाएगी तो इस पे हम क्यों invest करें. And it's very interesting to note that it wasn't really the employers were doubting the credibility or the prowess of the woman in question. वो उनके लिए secondary था. वो जितनी मर्जी एक जिसे कहते हैं talented और काबिल खातून के सामने बैठी होगी, उसका CV जितना मर्जी अच्छा होगा, उनको ये जो fear है कि जिसकी शादी होगी तो इसके पास पता नहीं अपनी decisions लेने की agency होगी कि नहीं, और फिर ये काम पे वापस आ सकेगी कि नहीं, is the governing thought in their minds when they are recruiting. So such a good pool of resource या आपका talent जो है वो सिर्फ इस वजह से at stake हो जाता है या उस पे एक doubt आ जाता है employers को, because there's an agency problem that women are perceived कि शादी के बाद उनके पास वो agency नहीं होगी, and this is something जो एक social issue उस तरह से है. और किस तरह से वो सोशल जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं खवातीन के अपॉर्चुनिटीज को इन द लीगल सेक्टर, इन द जस्टिस सेक्टर हिंडर कर रहे हैं, ये उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उनको इट्स नॉट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द वुमन, शी मे बी एक्सट्रीमली क्वालिफाइड एंड सूटेड फॉर द रोल, but she's a woman and she might get married, and then we don't know what will happen, what kind of a family she would be married into and all of that. So ये एक बहुत eye opening चीज थी उससे कि आप उस सोशल उस सारी चीज की वो सोशल बैगेज की वजह से आप उस खातून के प्रोस्पेक्ट्स को क्लिप कर रहे हैं, तो ये काफी डिस्टर्बिंग था. बट ये एक फियर है जो इवन बहुत सारी खवातीन ने शेयर किया. ये फियर उनको भी था कि इवन दे weren't sure कि उनकी वाकई शादी किस तरह के खानदान में होगी. सो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स का इशू नहीं है, ये ओवरऑल माशरे का इशू है. इसमें हमारी फैमिलीज, इन लॉ, सोसाइटी, सब लोग ही आ जाते हैं, बिकॉज nobody is willing to play any enabling role in ensuring that ये जो work life balance required है for women to succeed or even for men to succeed. I mean, why should they not have a work-life balance in their life? I mean, it's a question of human resource and better working conditions for everyone, not just for women. तो ये एक उसका एंगल निकला. दूसरा इसका एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब एक आदमी की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लाइफ में, तो वो यूजुअली अपवर्ड मोबिलिटी को और उसकी कॉम्पनसेशन, उसको एक प्रमोशन तो नहीं बट चलो उसकी सैलरी बढ़ा देंगे या जो भी कि जी अच्छा नाउ ही इज मैरिड, he has responsibility for family and everything, so it usually ends up in a higher salary for the man. But invariably women end up losing their jobs when they're in the same situation. So that's quite telling. And as far as this turnover perception and myth is concerned, क्योंकि हम myths को बस्ट कर ही रहे हैं, तो मैंने कहा इस हवाले से एक और रिलेटेड myth भी मैं बस्ट कर दूं कि ये परसेप्शन भी है कि जी बंदे जब जॉब स्विच करते हैं, वो एक फर्म में थे पहले, 2 साल बाद छोड़ के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ली, व्हाटएवर, तो ये तो एक अच्छी चीज है जिसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये तो अपवर्ड मोबिलिटी है एक तरह से कि वो अगर क्विट कर भी रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को, तो दे आर स्टिल इन द प्रोफेशन doing their own thing or whatever, or setting up their own law firm. तो उस चीज को एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और उसको नेगेटिवली नहीं देखा जाता. हालांकि नौकरी तो वो भी छोड़ रहा है ना, अपनी फर्म को तो वो भी छोड़ के कहीं और जा रहा है, लेकिन उसका जाना is not looked at negatively, especially उसके it's never held against his gender. But वही situation अगर if a woman has to leave her job for her सोशल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अगेन सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ये रोल्स प्ले करेगी, तो
it's viewed as a liability and is held against her entire gender. हालांकि ऐसी सिचुएशन So Ms. Nida will be rejoining us shortly. What she was discussing, I'll just continue that. ये बात एक्चुअली कोई भी अगर फीमेल लॉयर है उसने ये बात जरूर फेस की होगी कि जब उनको रिक्रूट किया जा रहा होता है या जब उनको हायर किया जा रहा होता है तो दे ऑब्वियसली viewed as at a disadvantaged position कि she'll have to leave in a couple of years. But मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देखती हूँ कि जितने हमारे मेल ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स, जब वो एक किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं, either they have higher education plans, in a year or two they're going for their LLM or they're going for their bar in a couple of years. Yeah. Or secondly, what happens is that a lot of male colleagues, they want to have their own independent practices at some stage. So as Ms. Nida rightly highlighted, this is not held against them. In fact, it is never even viewed as a problem. So, but when we look at women, unko obviously is a position में disadvantage मिल जाता है. So, Ms. Nida, you're back. Do you want to continue? Because I was just like elaborating upon how there's an inherent bias when it comes to hiring. So, yes, let's continue with the other myths. I'm so sorry about that. तो मैं बस वही बात करी थी कि किस तरह एक सिचुएशन में एक मेल और फीमेल दोनों ही लॉ फर्म को क्विट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मेल की quit karna is not looked upon negatively, and neither is it something that is held against his gender, whereas the same liberties are not available to women. तो ये कुछ harrowing discriminatory practices थी जो हमने देखी. फिर of course हमारे respondents ने भी इसके ऊपर अपनी thoughts भी share की हुई हैं, जो कि इस वक्त screen पे displayed है. And study के अंदर भी mentioned है. So if people want to have a more detailed idea of knowing के different जिसमें जाहिर है सबसे कॉमन वही होता है, सेक्सिस्ट क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके मैरिज, फैमिली, बच्चे के प्लान्स क्या हैं, आप कब तक काम करेंगी, आप छोड़ के चली जाएंगी कि नहीं. एंड एवरीवन एक्सपेक्ट्स अ वुमन टू कम फॉरवर्ड, बी मोर प्रोफेशनल, बी मोर कमिटेड. लाइक सब लोग खवातीन से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग देयर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दोज इनेबलिंग स्ट्रक्चर्स दैट कैन वेलकम, retain and sustain women in the workforce. Do you agree with that? Miss, I absolutely agree with that. And I mean, ये वो चीज है जो हम बहुत सारे अपने सीनियर्स से भी actually learn करते हैं. So any second year, third year law student actually at some stage has this revelation time जहाँ पे उसको ये सब कुछ पता चल जाता है. But one thing more. So this is what we face when it comes to hiring. This is the inherent bias. But ये चीज, it's an absolute reality कि हमारा जो social construct है उसमें a woman has to get married, she has to have a family at some stage. और जो मतलब एक जेंडर नॉर्म है कि she has to also be responsible for raising the child. तो ये चीज, it's a reality. Now, what are law firms and chambers doing कि ये balance एक खातून अगर अपने profession को भी देना चाह रही है, she wants to give her 100% to the profession, to her career, and also wants to manage a family. How can she do that? Exactly. And this is what brings me back to this question जो मैं कह रही थी कि ये हमने खवातीन के पर्सपेक्टिव से, उनके एंगल से भी इसको देखा, और उसमें ये एसेंशली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इवन फॉर विमेन, जैसे अगर फॉर द मेल काउंटर पार्ट्स या लॉ फर्म्स के एंगल से अगर खवातीन को हायर करना एक उनको मसला लगता है या बैगेज लगता है या लाइबिलिटी लगता है, तो इवन फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनको जो है उनको भी देखना पड़ता है कि what kind of a firm it's going to be, and what kind of whether it's going to be a safe and a conducive environment or not. So from the perspective of women, choosing a law firm is equally difficult, and it's an extremely important decision because it has a direct impact on your career. Right? गलत से मतलब ये कि a place which doesn't really welcome or value their female workforce, and they won't sort of give you the opportunities to grow, it can definitely be a deal breaker in the sense कि आपका career कभी take off ही नहीं करेगा और आप पीछे ही रह जाएंगे, आपको पीछे रखा जाएगा.
You won't get to go and argue cases. You won't have that kind of support structure which you need your firm to assert in front of your clients and everything. तो ये सारी जो overriding considerations हैं, women must deal with these when pursuing career opportunities in law, such as accessibility, safety, attitude क्या है, वहाँ acceptance कितनी है. तो ये सारे questions कि कितनी relatively safe वो जगह है उनके लिए, क्या उसको वो freely access कर सकती हैं कि नहीं, वहाँ उनकी needs को understand किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. So this is something that is obviously a question mark even from the perspective of women. And some more recent, younger progressive law firms, of course, we find that they are trying to nurture a culture of respect, safety, diversity, and inclusion. But such places are few and far between. And this makes it very difficult for women to find a workplace that meets their needs and harnesses their full potential as a talent resource. Right. So with that, I mean, there has been an in-depth interdisciplinary gap analysis study that you've done. So I'm sure there's a lot of primary data that you'd like to share, particularly when it comes to law firms, chambers, or unke andar kya state of representation hai, what have been your respondents' views. So if you would like to reflect on that, kya aapki study ke andar main findings kya hai? Particularly with regards to Yes, I want to definitely go to that slide as well, but मैं थोड़ा सा इस चीज को और जरा सा elaborate कर दूं. एक चीज जो हम मिस अभी तक कर रहे हैं, वो ये समझना कि ये जो हमारी basically law firms हैं, इनकी centrality क्या है और ये इतनी important कैसे हैं, या इनका क्या रोल होता है और इनका impact क्या होता है in the career development of a person, for example. So law firms क्यों जरूरी है? अब देखें, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, जब आप ग्रेजुएट करते हैं, आपका एक प्रोसेस होता है, आपने लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी अब उन्होंने काफी उस चीज को स्ट्रीमलाइन कर दिया. एंड यू हैव टू अटैच योरसेल्फ विद द सीनियर, यू हैव टू actually appear with him and support him and assist your senior in a number of cases. और फिर आपका इंटरव्यू वगैरह भी होता है, इंटीमेशन फॉर्म, like that whole process is there, जिसमें again you have to work with the senior. And then in most cases of course आपको law firms के साथ attach होना पड़ता है. वैसे तो कोई आपके ऊपर obligation नहीं है कि आप डेफिनेटली सीनियर के साथ ही काम करें, आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि इट्स नॉट दैट इजी. दिस इज अ प्रोफेशन जिसके अंदर पर्सनल रेप्यूटेशन और क्लाइंट्स बनाना और एक पूरी अपनी वो जिसे कहते हैं प्रोफाइल बनाने में टाइम लगता है. तो इसलिए ज्यादातर लोग ग्रेजुएट करने के बाद मौके ढूंढते हैं कि वो किसी फर्म के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि लॉ फर्म्स आर हब्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव लीगल प्रैक्टिस. उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, काम होते हैं, और शुरू में जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो you have to learn the practical side of matters and performance and everything. So it's very important कि आपके पास कोई इस तरह की एक फर्म के साथ आप अटैच्ड हो और आप वहां पे सीख सकें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें. अब ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस आपकी ग्रोथ सिर्फ लॉ फर्म के अंदर इंश्योर नहीं करते. जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे अगर प्रोफेशन के अंदर जिस तरह सीनियोरिटी का बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ढिंढोरा पीटा जाता है हर चीज में, वो कहते हैं जी सीनियोरिटी, तो वो सीनियोरिटी कैसे काउंट होती है, और उसके साथ साथ और भी टेक्निकलिटीज हैं, थिंग्स लाइक कि आप कितने केसेस में आए, कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स है, कितनी कोर्ट अटेंडेंस है. क्योंकि देखिए, अगर आपने कल को जुडिशरी का इम्तिहान देना है तो उसमें भी आपकी एक्टिव लीगल प्रैक्टिस काउंट होगी. अगर आपने कल को इफ यू डिजायर कि आपको हाई कोर्ट के जज के लिए भी कंसिडर किया जाए, तो आपको चीफ के सामने कोई कम से कम पेश होना, कोई आपके 10-12-15 जो है रिपोर्टेड केसेस हो, कुछ वो सारी चीजें मैटर करती हैं इन डिसाइडिंग कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कितने होंगे प्रोफेशन के अंदर एडवांस करने के लिए. सो यू गेट माई पॉइंट कि लॉ फर्म्स आर लिटरली द हब्स, दे आर स्टेपिंग stones for progression and advancement, not just inside the firm कि आपने पार्टनर बन जाना है उस फर्म का at the end of the day, but अगर आपने कल को अपनी लीगल प्रैक्टिस से किसी और सेक्टर में भी एडवांस करना है या प्रोग्रेस करना है, तो उधर भी आपको जो लॉ फर्म एक बेस देता है वो आपके लिए बहुत जरूरी है. You get my point? And in absence of course any stipend or financial security, young advocates जो हैं they depend on finding work with seniors or placements at law firms, और वहां पे भी
काफी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर ये इंटर्नशिप्स वगैरह भी अनपेड होती हैं, शुरू में आपके पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए इनफ फंड्स नहीं होते, और ये भी एक क्रिटिसिज्म आता है कि इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक सर्टेन क्लास के बच्चों तक के लिए महदूद रह जाती है, और वो ही फिर प्रोफेशन में एक्सेल और सर्वाइव करते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के भी बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो ये सारा फिनोमेना बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि किस तरह लॉ फर्म्स की एक सेंट्रलिटी है, एक सेंट्रल रोल है आपकी प्रोग्रेशन में, और अगर वहीं पे इंक्लूजन और डाइवर्सिटी नहीं होगी और वहां पे खवातीन को लाइक उस एंट्री पॉइंट के ऊपर ही अगर डिस्करेजमेंट या एक्टिव लीगल प्रैक्टिस से डिस्करेज किया जाएगा और पीछे रखा जाएगा, और सिर्फ आप केसेस तैयार करके अपने मेल काउंटर पार्ट्स को देंगे कि वो जाके आर्ग्यू करें, तो नेचुरली आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं करियर में आगे जाने के, वो बहुत मल्टीपल लेवल्स पे इम्पैक्ट होंगे और इफेक्ट आएगा उनका। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है which we often skip, and this then obviously connects with the other larger issues of how there's lack of financial security, there's lack of transparency, and you have to spend long unproductive hours at the start of your practice, and the respondents went to the extent of saying that the profession suffers from lack of professionalism, कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को क्विट इसलिए नहीं करते कि जी वो खवातीन है या उनकी शादी हो गई है। सो इट्स नॉट जस्ट अ मैरिज थिंग। इतना जो इस प्रोफेशन में लोग इसको पहले 2 साल में छोड़ के जाते हैं, वो सिर्फ उसकी वजह मैरिज नहीं है। और ये समझने की बात है कि इस सेक्टर में, जस्टिस सेक्टर में हमारा एक रिटेंशन प्रॉब्लम है। हम अपने टैलेंटेड लोगों को रिटेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज, कि कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जिसने अपनी फैमिलीज को सस्टेन करना है, वो विदाउट अ प्रॉपर फंड फॉर जूनियर लॉयर्स या प्रॉपर एक जो जैसे इंटर्नशिप्स आप देख रहे हो सारा, वो कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, कि हमेशा मैरिज और वो चीजें हाईलाइट ज्यादा हो जाती है कि जो इसकी वजह से खवातीन छोड़ के चली गई, बट असल में तो आप ये देखें ना कि आपका एक रिटेंशन प्रॉब्लम है इस सेक्टर के अंदर, उस पर कोई बात नहीं करता, बिकॉज दैट्स वेयर दे आर बीइंग पुट अंडर अ स्पॉटलाइट टू कंसिडर कि आपने क्या किया है। एंड देन ऑफ कोर्स दिस क्लास आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, कि जी बहुत सारी जगहों पे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फॉरेन क्वालिफाइड बच्चे प्रेफर किए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वजह बनते हैं लोगों को इस प्रोफेशन को छोड़ने की। Marriage is not the only one, and these are all issues to law firms related, and yet law firms इतनी central है to your growth in the profession कि अभी तक हमने इसको क्यों नहीं regulate किया is totally beyond me, and I'm quite surprised, and I feel that more young people should be demanding their rights because they are impacted directly, whether they're women or whether they're men. फिर आप ये देखें, यंगर लॉयर्स दे आर ट्रीटेड मोर लाइक पर्सनल असिस्टेंट्स, ये भी कंप्लेंट्स आई। इसके अलावा आप देखें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, अंडरपेड है, आपकी अगर इफ एनी एट ऑल कोई सैलरी आपको मिलनी है तो उसके अंदर भी कोई रेगुलेशंस नहीं है, वो डिस्क्रेशन है कि वो कितनी होगी, कब होगी, क्या होगी। एंड दिस कंबाइंड रिजल्ट ऑफ अनपेड लेबर विद लिटिल और नो लर्निंग एंड ग्रोथ, ये बहुत डिसग्रंटल कर देता है लोगों को बड़ी जल्दी, ऑन इन द सेंस के ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग नहीं होता इतना उनके लिए, फिर ग्रोथ भी नहीं हो रही, सीख भी नहीं रहे, कुछ पर्सनल असिस्टेंट्स की तरह बस बने हुए हैं, एंड all of that, and then that kind of just results in people leaving this profession. And women though, like they have to obviously work twice as hard, they have to overcompensate to be taken seriously in the profession. So ये सारे मसाइल तो हैं इसके साथ. I don't know if you agree with me or not, and whether you have ever experienced these issues. So enlighten me your thoughts on this. So, Miss, even before I was joining this profession, because I come from a pre-medical background, जब मैं सोच भी रही थी, when I was contemplating कि मुझे law join करना चाहिए, law firm का, तो obviously पता था कि eventually like you'll end up working at a law firm. As I mentioned towards the start of this session, कि हर law student ने eventually they have to land in a law firm. What my friends who were not lawyers, they used to tell me, वो कहती थी कि हम जब एक ही चीज हम देख रहे हैं lawyers के साथ, अब जब देखते हैं there's so many lawyers and either they're unemployed, they're not getting regular work,
or they're heavily underpaid. मतलब उनकी salaries नहीं है as such. They're not earning उतना. Or I mean, there was an interesting interview that I was listening to, और उसमें a senior lawyer was saying कि a lot of lawyers, around 80% of them, are very very underpaid. और ये नहीं depend करता कि वो अभी like recently practice join की, even after 3-4 years of joining the practice, you're just earning peanuts. आप नहीं उतना कमा पा रहे कि आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर सको. और लॉयर्स के, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू कि कोई रेगुलेशन नहीं है कि अच्छा मिनिमम सैलरी इतनी है, एक महीने में इतना तो कमाना है. कुछ नहीं पता. सो अगर मैं कल एक लॉ फर्म को ज्वाइन करती हूँ, मुझे नहीं पता कि हम element also. There's a mental toll element also, psychologically जो इसका toll और stress levels है इस profession में बड़े high हैं कि लोगों को stress, I mean वो हमने खैर स्टडी में तो नहीं वो हमारा scope नहीं था, लेकिन generally I mean would you agree कि बहुत contribute करते हैं आपकी psychological health and stress के हवाले से? So अभी recently there was a report, obviously पाकिस्तान के बारे में तो नहीं थी, but I mean there was a survey in the US, and it found out that there's so many students, especially after the pandemic, जिनके mental health इस point तक deteriorate कर चुके हैं कि they've considered suicide at some point during the past 2-3 years. So there is a significant problem जो कि lawyers की mental health के साथ भी related है. I mean अब हम अगर एक example लें, so medical के profession के अंदर अगर house job होती है after you've done your like MBBS, उसके बाद आपको एक certain, you're paid for that. But in law ऐसा कोई system ही नहीं है कि आपको पता होगा कि अच्छा after I graduate मुझे इतना साल अगर लगनी है to learn the work, this is the financial security I'll have, or this is like a fixed amount that I'll be getting. That will eventually and ultimately and inevitably take a toll on your mental health. और lawyers को बहुत सख्त mental issues हो रहे हैं, they're facing mental health issues, and that's quite concerning. So I'm sure कि कोई ना कोई think tank इस चीज को pick up करेगा, and they, like you focused on fair representation, there will be more attention given to the mental health of lawyers as well. So yes, that's a very very important concern. Absolutely. अब आपने कुछ डेटा की बात की थी, तो यही फाइंडिंग्स वही हैं. देखें कि क्या फर्म्स की फॉर्मल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं. आप देख लें 91% ऑफ देम सेड नहीं है. इसी तरह क्या कोई क्लियर प्रोग्रेशन रूट है, 86% सेड नो. क्या उनकी वेबसाइट्स पे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दी जाती है रिक्रूटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी के हवाले से. सिर्फ 15% वेबसाइट जो हमने देखी उनमें ये इंफॉर्मेशन तो मेंशन थी, बट अगेन वी वर नॉट एबल टू कंफर्म कि वो चीज प्रैक्टिकली भी ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही. लेकिन few things that we were able to confirm from the people were कि क्या जो process उनकी hiring का था, was it up to professional standards or not. To 57% of the law students that we surveyed, they said no. And as far as female lawyers are concerned, they said 52% of them said that no, their hiring process was not of professional standards. इसी तरीके से should there be a publicly declared process of recruitment, 88% agree. तो आप देखेंगे ये वो सारी essentially best practices ही की निशान. क्या करूँ हम, we also asked them कि do you think that entry and advancement is more challenging for women, and majority of them, like more than 50% of them, including members from the legal community, agree that yes, it is definitely more challenging. And some of the factors for that have been identified to be gender bias, social role and baggage, fear of harassment complaints and other liabilities, women looked of as more costly employees, and all of these things. So ये study के अंदर मौजूद है details इसकी, and essentially we, like I said, कि best practices missing है और arbitrary and lack of transparency ज़्यादा है. People would want to streamline and would want and appreciate more regulation so that there is basic level of security. So essentially this is what we found. अब chambers की बात, जहाँ तक है chambers का क्या है, हम बात करते हैं कि ठीक है law firms तो एक तरीका है ना कि आप firms के अंदर काम आपको मिल रहा है and all that, लेकिन chambers is another way. So जो लोग chambers essentially allot करते हैं, ये आपकी जो district bar association होती है वो chambers allot करती है according to their own internal rules and policies, which are again very like arbitrary, vague, and like there's no it's very difficult to even access them कि वो क्या rules है, वो क्या policies हैं. It's not very easy to figure those out, और ये आपको पूछ पाछ के, and you have to really like know the people to be for them to tell you कि ये rules है, ये policies है. So
And by allotting chambers, they may again consider rules like seniority and overall strength of the application of the person who's asking. Now chambers होते क्या है? Chambers are essentially, you know, जो आपको एक ऑफिस टाइप जगह मिल जाती है कि आपने अगर अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करनी है तो आप कर सकें और आपको थोड़ी सपोर्ट बाहर की तरफ से मिल जाए. लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि ये जब नए चैम्बर्स बनते भी हैं और उनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं लॉयर्स को थ्रू नोटिफिकेशन, तो फीमेल लॉयर्स की उतनी सक्सेसफुल नहीं होती. एंड इट्स यूजुअली द मोर इन्फ्लुएंशियल मेल लॉयर्स जिनको वो अलॉटमेंट्स दे दी जाती है. और दिस इज बिकॉज दिस एन एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस ना. आपने कोई बीच में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं डाली कि कम से कम इतने चेंबर्स जो है वो खवातीन को अलॉट किए जाएंगे. एंड दिस इम्पैक्ट्स देयर एबिलिटी टू ऑपरेट इंडिविजुअली एज वेल. तो एक तो फर्म्स में जाना मुश्किल है, ऊपर से आपको इंडिविजुअली भी ऑपरेट करना मुश्किल है बिकॉज रेंट्स फॉर प्राइवेट ऑफिसेज आर टू हाई, राइट. और आपके पास ऑफिस नहीं है या बैठने की कोई जगह नहीं है, तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस आपके लिए फिर और मुश्किल हो जाती है. और खवातीन क्योंकि ऑलरेडी कम कमा रही है प्रोफेशन के अंदर, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी उनके मेल काउंटर पार्ट से कम है, तो ये फिर मजीद उनको एक तरह से एक डिसएडवांटेज होता है उनके लिए कि वो उतनी आसानी से अपने ऑफिसेज सेटअप नहीं कर सकती. और अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी उनके लिए करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस तरह के स्ट्रक्चर और सेटअप के अंदर. Coupled with this, of course, is the final point that I wanted to highlight from the study, which is the image of the legal profession. And this is very important. You know, अभी हमने lately देखा है कि बहुत सारी discouragement की basis बनती है कि जो मीडिया में एक negative image है lawyers का और legal profession का. And then the rising incidence of violence against female lawyers and the unsafe working environment जो बनता जा रहा है कोर्ट्स के अंदर. And of course, this is in addition to sexual harassment and general catcalling और एक problematic behavior हम on a daily basis experience करते हैं courts में. ये उससे बढ़ के है कि अब वो बिल्कुल unsafe होता जा रहा है और बकायदा incidents of violence हम देखते हैं कि हो रहे हैं against female lawyers, right? तो ये एक बहुत ही बड़ा factor है जिसे overall perception जो है public spaces की और उसमें खवातीन की presence की, वो एक बहुत बड़ा सवाल बनती जा रही है, जिसकी वजह से भी एक डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, डिस्करेजमेंट हम देखते हैं कि लोग फैमिलीज वगैरह सब प्रेफर नहीं करते कि आप, या इवन फर्म्स वगैरह भी प्रेफर नहीं करती कि वो ये रिस्क उठाएं आपके हवाले से. तो ये सारे जो मसाइल हैं एसेंशली लॉ फर्म्स के एग्जिस्ट करते हैं. ओवर टू यू. Right. So, जब भी हम किसी भी discussion का part पढ़ते हैं, we do highlight that, you know, these are the obstacles, these are the problems that we found. Ms. Nida, can you hear me? Yeah, I can. Perfect. So, what are your proposals or what are your recommendations to improve the state of affairs? Because when we look at accounts, when we look at this entire study, there's certain things that might just be discouraging, but obviously there's a way forward. So what's the way forward? What should we all do together as a community, as a fraternity, to improve the state of affairs? बिल्कुल. I think I'll share some of the recommendations जो हमारे respondents ने ही दी है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जो लीगल एजुकेशन और लीगल प्रैक्टिस के बीच में गैप्स है, पहले तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि आपकी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो कि आपका ट्रेनिंग बेस्ड मॉडल हो और आपको किसी सीनियर के साथ अटैच होके ही जरूरी नहीं हो कि आप सीखो. एंड यू नो कोर्सेज और इस तरह की चीजें ऐसी होनी चाहिए विच कैन, या लीगल क्लिनिक्स ऐसे ज्यादा ऑफिशियल तरीके से. ऑफ कोर्स सम लॉ स्कूल्स आर डूइंग दैट, बार काउंसिल में भी कुछ लोग इंडिविजुअली अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है ताकि विमेन कैन एक्सेस ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिकल एंड एक्टिव लीगल प्रैक्टिस, खास तौर पे कि उनके जो एक्सेस है टू कोर्ट्स वो ज्यादा बढ़ सके और वो अपना काम, मतलब क्योंकि देखिए एक्टिव लीगल प्रैक्टिस नहीं होगी तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया बहुत सारी और चीजें नहीं हो पाएंगी. So that's very important. The second thing is that there needs to be a fund for supporting young lawyers in the first 2 years of their practice, जो establish करने की जरूरत है. वर्क प्लेसेस और ये जो इतनी चेम्बर्स एंड ये पॉलिसीज है, इसमें जेंडर लेंस की जरूरत है, अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है और इसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, जिसके अंदर क्लॉकिंग इन आवर्स मॉडल के बजाय आपका आउटपुट ड्रिवन मॉडल हो और आप फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स जो है उसकी तरफ जाएं. डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसको ज्यादा इन्फ्यूज करें
इसके अलावा ऑफ कोर्स रेगुलेटेड वर्क टाइमिंग्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए मैटरनिटी लीव बेनिफिट पॉलिसीज, ये लेजिस्लेशन के थ्रू इंश्योर हो, और इंस्टीट्यूशनल यानी बार काउंसिल के लेवल के ऊपर भी इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, कि सिर्फ इंडिविजुअल लॉ फर्म्स के तरफ से ना हो, बल्कि आप इसको प्रोफेशन जो जनरली है आपका, उसके एंगल से भी इसको आप देख रहे हो और कवर्ड हो. एंड फाइनली ऑफ कोर्स फॉर द लॉ फर्म्स there should be a clear entry and progression targets and standards should be provided. सबको पता हो कि किस तरह से प्रोग्रेस और एडवांसमेंट करनी है. इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, और हर एडवर्टाइजमेंट जो हो किसी वैकेंसी के अगेंस्ट उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट दें. वेलकम करें अपने फीमेल और दूसरे अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को ताकि वो अप्लाई करें. लाइजन करें लॉ फर्म्स लॉ स्कूल्स के साथ टू टेक पार्ट इन ग्रेजुएट प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो कि अब काफी हद तक होता भी है, बट वो महदूद है, उसके वसी करने की जरूरत है. एंड फाइनली जो अलॉटमेंट ऑफ चेम्बर्स है दैट मस्ट आल्सो बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट हैव स्पेसिफिक कोटास फॉर विमेन. Right, so that's a very comprehensive list, and I'm sure it's all possible if there is the right intent. If there's a will, then obviously a way can be made. और ये सब चीजें possible हो सकती हैं. I think जो हमारा legal profession अभी अपने image crisis से गुजर रहा है, जो उनका image का भी issue है, a lot of it would be improved अगर हम diversity के ऊपर focus करें. And I'm sure there's women in law and other law and other like think tanks, independent organizations will keep working कि हम ये image को improve कर सकें, और ये जो आपने proposals very rightly you've highlighted, इनको accept करवाया जाए on like all different forums जो हमारे bar councils वगैरह हैं उनके साथ ये take up किया जाए and implementation की तरफ जाए. So I hope this session was very insightful for our audience. Ms. Nida very comprehensively covered each and every aspect when it comes to fair representation in law firms and chambers. And I'm sure this was a very insightful session for everyone who joined. Thank you so much, Ms. Nida, for your time. And I think this brings us towards the end of this session. If you have any questions that you'd like to pose to women in law with regards to the study and with regards to this particular aspect, you can drop them in the comment section. I'm sure the administration will get back to you on those. And obviously there's studies there, and I encourage everyone who's joined this session and you want to know more about representation and the state of representation in the justice sector, you can go either on their website and read it, or you can get your hands on a hard copy. I don't know how that's going to be available, but I'm sure Ms. Nida can reflect more on that. Thank you so much, Ms. Nida, and I would just close this session for now. Hopefully they'll get to see you next week with another episode. Thank you so much. Thank you. Good afternoon. Good afternoon.